plus y square minus xz into j cap, y square minus xz into j cap plus z square minus xy, z square minus xy into k cap is what we have to show. You can see here and note is irrotational, irrotational, irrotational. इसके साथ साथ एक और एक भी एक्स्ट्रा काम पूछ रहा आपसे ने. The extra work is and hence find the scalar potential and hence find find the scalar scalar potential scalar potential. तो irrotational पहले कैसे शो करते हैं अपन वो पहले देखें. Then later on we can see how we are going to find out the scalar potential. Okay, okay, let us start. See the solution. Solution. If you want to show any vector is a irrotational vector, simply what we have to do, we have to find out the curl of this vector, and if the curl of if the value of this one is equal to 0, then we say that the vector is irrotational vector. So simply what we have to do, we have to find out the curl f value, curl curl f, and the meaning of this is curl कैसा डाइवर्जेंस कैसा फाइंड आउट करते हैं, कल इस तरह से ना अपन डेल डॉट एफ करें ना. हेलो, Yes, sir. कल अपन ऑलरेडी देखे ना बाबा कैसा How, करते हैं sir? How, sir? डाइवर्जेंस. अभी कर्ल देखेंगे, डेल क्रॉस एफ. ओके, मीर यू हैव जॉइनिंग, मीर इज देयर इन द वेटिंग रूम. ओके, हेलो. Hello. Yes, sir. Curl, how to find out, we can see today. The way of finding the curl is is equal to your first row will be I j k, then del coefficients are I j k के coefficients लिखना है यहाँ, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. In the vector f also we have to write their I j k coefficients, x square minus yz, y square minus xz, and z square minus xy. These are the coefficients we have to write, and we have to find out their magnitude. इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है आप. ओके, कैसा करेंगे मैग्नीट्यूड? डू यू हैव एनी आइडिया? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट इट? द रूल इज प्लस minus plus will be the rule. It means when we are doing with respect to I, corresponding row and column we have to neglect. Okay, this value with respect to y I am doing directly with respect to y. What's the answer? Come on, answer. Dou by dou y of z square minus xy. What's the answer? Minus X. Exactly correct. Minus x. Minus is there in our formula. Now this value partially differentiate with respect to z. Minus X. Minus into Plus minus X. plus x.
This is minus j cap into, once again we have to neglect this column and this row. Then what we have to do, I'll show you. This one, minus y column and row means this one with respect to x, this value with respect to x. What's the answer? Tell me. minus y Minus y. Minus is there in plus our y formula. And now this plus one y with respect to z, plus y. Okay. Then plus k cap, plus k cap into corresponding column and row we neglect. This value with respect to x now. Come on. What happened? minus y No, with respect to x, minus z. X. Minus z, x becomes 1 minus as it is z value. Correct? Correct Yes. or not? Yes. Now this one with respect to y again, Minus Y. into minus plus 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 z. z Now without loss of generality, you can see these are the values which are 0 cancelled. It becomes 0. Which value is 0? Curl f is equal to 0. Curl f is equal to 0 means f is irrotational. This implies that f is irrotational. ये जो क्वेश्चन मैं अभी कर रहा हूँ आपको, ये दो क्वेश्चन है असल में. इरोटेशनल का वर्क तो यहाँ पे हो गया, ठीक है ना. इरोटेशनल शो करने का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया है. अभी आगे आपको बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन कभी कभी ये मल्लारेड्डी कॉलेज में एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था, नवाब शाह आलम के क्वेश्चन पेपर में आया था. ये लोग साथ में स्केलर पोटेंशियल भी पूछ रहे. तो स्केलर पोटेंशियल के लिए आपको करना क्या है, स्केलर पोटेंशियल जब भी आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड. ओके, ये आई का कोएफिशिएंट है, इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना, इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना, इसको विद रेस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करना. ठीक है, तो लेट मी डू इट. मैं कर रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए सही है या नहीं है क्या है. ओके, लेट अस स्टार्ट. दिस वन फर्स्ट विल डू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड को पहले कर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड. तो कुछ नाम दे के करेंगे अपन. क्या नाम देंगे इसको अपन, चलिए इसको अपन बोलेंगे फाई वन बोलेंगे. So when integrating phi 1 with respect to x, what's the answer? Tell me. x cube by 3 3 minus this one with respect to x means what you will get? X, y, x y z correct? Constant को भी add नहीं करेंगे अपन. Later on we can add. Next to phi 2. Phi 2 is equal to what we are taking? Y square minus xz. x This one we have to integrate this value with respect to y. What's the answer? Y cube by 3 minus x, y, z again, correct? Now phi 3. Phi 3 means x square minus xy. This value we have to integrate with respect to z. This is equal to z cube by 3 minus x, y, z. और ये तीनों आंसर्स को अगर अपन फाई के लिए ऐड कर लिए, तो जब आप ऐड करेंगे तो फाई 1 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस फाई 2 इंटीग्रेशन डी वाई प्लस फाई 3 इंटीग्रेशन डी जेड. टेल मी व्हाट आर द आंसर्स वी आर गेटिंग फॉर फाई. वी आर फाइंडिंग द स्केलर पोटेंशियल फाइनली. क्या होता है ऐड करें तो, बोलो square बाबा. minus क्यूब बाई y z 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस जेड क्यूब बाई 3. सही है. जी सर.
minus 3xyz खत्म, minus 3xyz, that's your answer. This is called scalar potential. अब यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, this is called scalar potential. आप ऐसा नहीं लिख के भी डायरेक्ट भी इंटीग्रेट भी करें तो चलेगा, स्केलर पोटेंशियल, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन में दो काम करें अपन, क्या करें, कर्ल Irrotational रोटेशनल भी curl prove F करें। यस यस, अब एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे अपन, देखिए नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन इज if f is equal to, if f is equal to x plus y plus 1 of I cap plus j cap minus x plus y into k cap, x plus y into k cap, then show that, then show that की जगह पे मैं एस टी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, show that f का डॉट प्रोडक्ट, f डॉट कर्ल f डॉट, एक्चुअली ये जो है ना इरोटेशनल वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज करे, कल डाइवर्जेंस के करे ना, आज कर्ल के प्रॉपर्टीज को। तो पहले क्या करना है, कर्ल एफ फाइंड आउट करना है, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ में जीरो होता बोल के बताना है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में दो काम करना है, कर्ल एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कर्ल एफ को जीरो बताना नहीं है यहाँ, फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ल एफ, हाउ टू फाइंड आउट, simply we can start our work, that is I j k, del coefficients are dou by dou x, come on give me the answer, dou by dou y, dou by dou z, and f coefficients, what are the f coefficients, x plus y plus 1, this is 1, this is minus x minus y, सही है, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सही है ना, हाँ राइट, the rule is plus minus plus will be the rule. Now with respect to I, when we are doing now, corresponding row and column we have to neglect, this value with respect to y we have to do it, that is minus 1 you will get, correct है, -1. yes, this one with respect to z, is there any z, No. minus 0, close it, second element with minus sign with j cap, column and row neglect, this value with respect to x minus 1, correct, this value with respect to z is not there, minus 0, plus k cap into once again column and row we neglect, with respect to x is not there, minus with respect to y is 1, सही करा मैं, माइनस आई कैप, बोलिए आंसर बोलिए, -I plus j minus k. तो माइनस के कैप, तो किसकी वैल्यू आई है, Curl F. Curl F. कर्ल एफ की वैल्यू। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एफ डॉट F dot curl F. कर्ल एफ डॉट कर्ल इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही है, एक्स प्लस वाई प्लस 1 ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस एक्स प्लस वाई इंटू के कैप, दिस वन
dot product with Dot product. It's minus minus I I plus plus j one. minus k, and we know that I Seven. dot I is 1. Yes, I dot I is 1. So what's the answer? ये -1 के साथ ये पूरे मल्टीप्लाई होते, तो मीन्स -x -y -1 सही करा मैं? Yes, sir. j डॉट j इज 1 मीन्स 1 1 1. अब उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस y ओनली लेफ्ट. X plus Y. नाउ इफ यू नोटिस ऑल द वैल्यूज आर कैंसल. नाउ देखिए -x से +x कैंसिल हो जा रहा, -y से +y कैंसिल हो जा रहा, +1 से -1 कैंसिल हो जा रहा. तो आंसर क्या आ गया? 0. यही बताना है आपको. एफ डॉट कर लेफ्ट का आंसर क्या बताना था आपने को? 0. Zero. आ गया ना 0? आया नहीं है? जी सर. ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में. राइट. ये क्वेश्चन आया देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा अलग है थोड़ा क्वेश्चन में, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे. फाइंड द कॉन्स्टेंट्स find the constants a and b, a comma b and c, a comma b and c, so that so that so that the vector so that the vector यहाँ पे ना क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वेक्टर ए बोल के दिया है. कुछ भी दे सकता है ना, वी दे सकता है, एफ दे सकता है, क्या भी दे सकता है. बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड. Along with this I cap, then bx minus 3y minus z, bx minus 3y minus z, and along with this j cap, and 4x plus cy plus 2z, 4x plus cy plus 2z, and along with this we have k cap. Is क्या बताना है देखो, is a irrotational, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है. is a irrotational, ऑलरेडी irrotational बोला, is irrotational मतलब कर लेफ्ट की वैल्यू पहले से ही 0 है. Zero रहती. ओके, देन हाँ, बस इतना ही है. तो सोल्यूशन करेंगे इसका. चलिए, ऑलरेडी इरोटेशनल है मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करा? कर्ल क्या होता, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0. ये ऑलरेडी गिवन है ना. इरोटेशनल का मतलब क्या है? इफ Curl F is equals to zero. इफ ए इज इरोटेशनल, इफ ए इज इरोटेशनल, Curl A is equals to. कर्ल ए इज इक्वल टू 0. ये मैथमेटिकल मीनिंग भी लिख दिया अपन. द मीनिंग ऑफ दिस कर्ल ए इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस डॉट, सॉरी, डेल क्रॉस ए का जो आंसर आया है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बोल रहा है वो 0 होता हूँ. तो अपन देखेंगे वो क्या है. Now look at I. What is the first row will be? I, J, K. This is your first row, and already we know that the answer is 0 also. Del coefficient क्या है भाई? Dou by dou x X.
दो बाई दो एक्स, दो बाई दो वाई, दो वाई into dou दो by बाई dou दो z, जेड। right? And then here the coefficients we have to write is as x plus एक्स प्लस टू वाई 2y प्लस ए plus जेड। az, and here बी एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड। bx minus 3y minus z, एक प्लस माइनस का भी गलती हो गया तो आंसर अलग हो जाता, 4x plus cy plus 2z, 4x plus cy plus 2z. Now again we have to apply the same rule that we know that it is plus minus, plus will be the rule. प्लस Now along with I, if you are doing now, already 0 है, be careful. जब भी आप I के साथ करेंगे, सी प्लस वन। yes exactly, with respect to Y अगर आप कर रहे हैं इसको, तो C, yes very good, C plus 1, माइनस जे के आपके साथ भी बोले, फोर माइनस ए। वेरी गुड, 4 माइनस ए, के आपके साथ बोले, बी माइनस टू। मिस्टर मीर आर यू गेटिंग द सेम थिंग, जी सर। इज इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी 0 and we know that I is not 0, I is a vector will not be 0 if, यहाँ पे दिख रहा है आपको I into C plus 1 equal to 0 का मतलब I तो 0 नहीं होता, definitely C plus 1 is equal to 0, it means what is the value of C, C is वन equal माइनस to वन। minus 1, similarly minus 4 minus A is equal to 0 का मतलब, ए इज इक्वल्स टू फोर। very good, B minus 2 is equal to 0 का मतलब, बी इक्वल्स टू टू। B is equal to, बी इज because इक्वल्स टू टू। दिस ij के वैल्यूज आर नॉट 0, ये 0 तो नहीं हो सकते, अगर ये 0 हो गए समझो यहाँ पे ij के को 0 लिख दिया तो फिर इसका मतलब ही कुछ भी नहीं, so ijk will not be 0, so definitely product of these two values equal to 0 means either I 0 or C plus 1 equal to 0, we know that I, j, k are not 0, so definitely C plus 1 equal to 0, from this C value, A value and B value we can get, this is the question. ये टॉपिक खत्म होने के बाद में अपने को करना है एक और एक क्वेश्चन ले लेंगे, नेक्स्ट पेज, थोड़ा सा आप ये पिछला रिवाइज करिए एक सेकंड में, अभी मैं विल स्टार्ट कंटिन्यू तो दूसरा पेपर ले, we can see now how we are going to find out the solenoidal vector, solenoidal vectors के लिए कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, और है क्या देखो कुछ, क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ मैं आपको सोलोनॉइडल वेक्टर्स बताने के लिए,
हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है। क्वेश्चन है, ये पूरे शॉर्ट आंसर रहते, लॉन्ग आंसर नहीं आता है। इफ f इज इक्वल टू, वेक्टर f इज इक्वल टू y z I कैप प्लस x z j कैप प्लस x y k कैप, देन देन फाइंड फाइंड कर ले, देन फाइंड कर ले, कर ले एट p 1 2 3। मैं अभी आपको बताया कर ले कैसा फाइंड आउट करो, ठीक है ना, बताया ना। कर ले फाइंड आउट कैसा करते अभी बताया ना। हाँ सर। तो बस आपको एक्स्ट्रा वर्क क्या करना है, यू हैव टू एक्स शो वाई दैट। जेड के पॉइंट पॉइंट्स पॉइंट में लास्ट में वो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है, बस करके बोलिए आंसर। कर लेफ्ट करिए, कर दो मैं, कर लेफ्ट का मतलब क्या है, व्हाट्स द मीनिंग। डेल डॉट है। क्रॉस एफ, नॉट डॉट, इट्स क्रॉस आई जे के, व्हाट आर द डो बाय डो एक्स डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई डो बाय डो जेड। डो बाय डो वाई, डो बाय डो, and here what you will get, वाई जेड जेड y z एक्स एंड एक्स वाई z x and x एंड y। एक्स वाई The rule is plus, माइनस minus प्लस। plus is the rule. This is along with I cap. Can you tell me the answer of this? X minus x, correct यस सर। है ना। दिस वन विथ वाई रेस्पेक्ट टू y करना था, x बचता, हाँ इसको विथ रेस्पेक्ट टू z करे तो फिर x बचता, जी सर। माइनस j cap into column and row we have to neglect, with respect to x वाई means y माइनस वाई minus y, okay no problem, plus k cap जेड माइनस uh, with respect to x z minus z। तो अपने पास सब्स्टिट्यूट करने के लिए पॉइंट है ही नहीं इसका मतलब। सर जीरो आ रहा सर आंसर। हाँ रहने दीजिए, कोई मसला नहीं, कैंसिल हो जाएगा। कर ले, इसकी वैल्यू आएगी 0, और कर ले अगर आप वो पॉइंट पे भी करें एट पी, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको और कुछ भी नहीं। 1 2 3, तो क्या होता आंसर, जीरो। 0 होता। क्यों होता 0, क्यों होता 0 बोलिए। सब्स्टिट्यूट करने के लिए वहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, है इस नहीं। वहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता। ये जो क्वेश्चन मैं अभी कर रहा हूँ वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूज करता आपको, तो वहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, फिर आपको फाइंड आउट करो बोलो। तो कुछ एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन, समझ में आया ना। यस सर। एग्जामिनर ट्राई टू कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे तो भी उन्हें इधर से उधर से वैल्यूज ला के दे देता। अब एक काम करेंगे अपन, एक और क्वेश्चन ले लेंगे सोलोनाइडल के ऊपर, ओके, इरोटेक्शनल सोलोनाइडल।
तो क्वेश्चन है show that the vector field capital V is equal to sin y plus z into I cap plus x cos y minus z into j cap plus x minus y into k cap is is irrotational is irrotational irrotational शो करना है कैसे शो करेंगे irrotational है बोल के कर्ल एफ जीरो लाना है। that's it you have to find out curl f value not f यहाँ पे क्या है v है ना इसका मतलब डेल का क्रॉस प्रोडक्ट v के साथ और फाइनली जो आंसर आने वाला है वो आंसर होगा 0 ठीक है ना दिस इज इक्वल टू I J J K K. What are the del coefficients we know already? by dou x dou by Dou dou by y dou dou x, by dou dou by dou y, dou by dou z. And V coefficients are sin y plus sin z y plus z, x cos y minus z x cos y minus z, and this x is what? minus y X minus y. And same rule, plus minus plus rule. plus minus plus is the rule. So along with I, डायरेक्ट आंसर्स करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y करें तो -1 आता देखिए करेक्ट है ये विथ रेस्पेक्ट टू y -1 दिस वन विथ रेस्पेक्ट टू z +1 सही है इज इट करेक्ट यस सर। तो इतना टाइम क्यों ले रही थी बोलने के लिए आपको माइनस जे कैप इंटू कॉलम एंड रो वी नेग्लेक्ट दिस वन कॉलम एंड रो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फिर से ये हो जाएगा फिर से 1 -1 प्लस के कैप इंटू कॉलम एंड रो नेग्लेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स क्या होता कॉस वाई माइनस विथ रेस्पेक्ट टू वाई साइन वाई का फिर से कॉस वाई माइनस कॉस वाई तो क्या हो गया फाइनली जीरो। प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल व्हाट्स आंसर 0 which 0 answer is 0 हेंस irrotational curl v रोटेशनल। curl v is equal to 0 this implies v is irrotational v is irrotational एक सोलोनॉइडल का भी करना है 3 मिनट का टाइम है कर देता हूँ एक सोलोनॉइडल का क्वेश्चन कर रहा हूँ शो दैट f is equal to x plus 3y into I cap plus y minus 3z into j cap plus x minus 2z into k cap is irrotational का हो गया सोलोनॉइडल SO
LENOIDAL। पिछले क्वेश्चन में अपन डेल क्रॉस एफ की वैल्यू को 0 बताया था, याद है ना आपको? याद है नहीं है? हाँ सर। कल तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डेल का डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ 0 बताना। डेल का डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ अगर 0 हो रहा देन एफ इज कॉल्ड सोलोनाइडल, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा देन एफ इज कॉल्ड इरोडेक्स। ठीक है, डेल की कोफिशिएंट तो आपको पता ही है, आई डो बाई डो एक्स प्लस जे डो बाई डो वाई प्लस के डो बाई डो जेड प्लस के डो बाई डो जेड। इसका जो डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ करना है एक्स प्लस 3y इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस 3z तो जी इंटू क्या जे कैप प्लस एक्स माइनस 2z इंटू के कैप इंटू के कैप। नाउ वी नो दैट आई डॉट आई इज 1। इसका मतलब ये डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ मैं, डो बाई डो एक्स ऑफ दिस वैल्यू, व्हाट्स आंसर 1। करेक्ट, करेक्ट, बोलिए। डो बाई डो वाई ऑफ जी दिस वैल्यू क्या होता, जे डॉट जे इज 1, अगेन 1। नाउ लास्ट में डो बाई डो जेड ऑफ दिस वैल्यू, के डॉट के तो 1 हो यार, तो क्या आता हाँ -2 सर। आता, तो कितना हो गया 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। 0। विच वैल्यू इज 0, डेल dot del f f is equal to 0. This implies what do we say, f is solenoid। erotic solenoid. सोलोनॉइडल और रोटेशनल के प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गए। देखता हूँ मैं कल और कुछ अगर प्रॉपर्टीज और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो कल ये आपको ये वेक्टर डिफरेंशिएशन की लास्ट क्लास रहती। ओके, दिस मीटिंग इज एंड अप नाउ। I'll send the recording and video.